Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, we are going to discuss about the top common mistakes to avoid during UPSC or civil service preparation. So as you know कि many aspirants used to ask me कि sir मैं जो ऐसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसमें मेरी क्या गलती हुई है ओके अच्छा सर मैं स्टेट सर्विस के लिए कर रहा हूँ मेरी क्या गलती हुई है ठीक है तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो ये आप लोग का जो डाउट्स होता है उसको आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ हमेशा एक चीज़ें ध्यान में रखिएगा अगर आपको अपना मिस्टेक पता होगा सो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल ये आपको ध्यान में रखना है सो दैट मीन्स यू विल हैव टू फाइंड आउट योर मिस्टेक आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा एक कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ठीक है कुछ यूनिक मिस्टेक भी हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स का बट दे आर फ्यू कॉमन मिस्टेक्स एंड विल हैव टू डिस्कस वन बाय वन सो बिफोर मूविंग अहेड यू कैन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला था फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल समझिएगा एक चीजें कि एक आपके स्कॉलर है बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बोला कि प्रिपेयर फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल सो अगर हम लोग बात करते हैं अगर आप अपना सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे सो दैट मीन्स क्या आप फेल होने का प्रिपरेशन कर रहे हैं so that means we'll have to know about what should be the best way to prepare prepare for the civil service examination so I'm going to discuss about the few common mistakes and we'll discuss one by one first thing first mistake number 1 let's suppose lakhs of aspirants are preparing for this exam but I can give you the guarantee that many of them they don't know the syllabus exact syllabus of the UPSC they don't know the major topics subtopics okay just like major subjects which subjects are important for pre come mains which subjects are only important for the mains we'll have to know about these things so first of all you will have to try to understand okay what is the syllabus of UPSC कहते हैं सिलेबस आपकी जीवों के ऊपर होना चाहिए कि कभी भी अगर आप पढ़ाई करते हो ठीक है स्टडी करते हो सो यू शुड नो कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस पोर्शन दिस सब्जेक्ट दिस टॉपिक दिस मेजर टॉपिक दिस माइक्रो टॉपिक ओके सो फर्स्ट मिस्टेक नंबर 1 नॉट अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी और यू कैन से कि एनी एग्जाम सिलेबस दैट मींस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिलेबस देन हाउ कैन यू प्रिपेयर फिर तो जो मिलेगा पढ़ते जाओगे होता क्या ना एक वर्ड हम लोग हिंदी में यूज करते हैं कलेक्टर बनने से पहले बुक कलेक्टर नहीं बनना है हमें क्या करना है सिलेबस को देखना है सिलेबस को समझना है हमें यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है उसको ट्रेंड्स को समझना है नेचर को समझना है एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू विल हैव टू नो अबाउट द सिलेबस सो क्या आप इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं गेट फेमिलियर विद द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओके and then you'll have to basically break it down by subject and subtopic topic okay and then you'll have to go through the UPSC PYQs or state service PYQs so you'll get the ideas about the you can say trend of the civil service examination so first you will have to understand the syllabus सो आपको क्या करना है ये मिस्टेक नहीं करना है कि हम सिलेबस को देखे ही नहीं नेचर को समझे ही नहीं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा या पूछा जा रहा है और हम सीधा अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं नो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सो वी विल हैव टू अवॉइड सेकंड थिंग मिस्टेक नंबर 2 lack of proper study plan let's suppose if you are going to okay prepare for this exam so you should have your proper study plan so how can you utilize your free time for civil service examination just like let's suppose if you have 8 to 10 hours and if you are full-time aspirants you can easily manage just like there is for one method okay so method is what 5 ratio 3 ratio 2 just like 50% time for GS 30% time for optional and then 20% time for reading revision like this thing okay सो अगर मैं आपको कहूं तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको क्या करना है एक अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है मेजर सब्जेक्ट के साथ पहले तो अपना बेसिक्स क्लियर करना है यू कैन नॉट अवॉइड द एनसीईआरटी बिकॉज यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स ओके सो वी कैन नॉट अवॉइड विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग बट फर्स्ट let's suppose if you are familiar with the UPSC syllabus or civil service examination syllabus then set your study plan
and your study plan should be realistic, you can follow, okay, you can follow the study plan. ये नहीं कि आज हमने बनाया कल हमने छोड़ दिया, नहीं, आपको उसके साथ स्टिक होना होगा, ओके। तो कौन से आप इसमें कर सकते हैं मिस्टेक अवॉइड, तो अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान कि आज का हमारा क्या है, महीने में हम ये क्या करने वाले हैं, सारी चीजें, और प्लान कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड एडेप्टेबल, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको प्लान चेंज करना पड़े, कुछ इमरजेंसी हो जाए, बट आपका जो प्रॉपर प्लान जो है जरूर आपके पास होना चाहिए। इंक्लूड की सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, ओके, आपको जो है इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स जो है उसको रखना होगा पहले, जो प्री का मेंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं विल हैव टू कवर, एंड देन आफ्टर दैट विल हैव टू मूव फॉर डिफरेंट थिंग्स, ओके। Mistake number 3, ignoring current affair. Many aspirants, okay, they basically used to ask me कि सर करंट अफेयर का क्या करें, छोड़े रहने दे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो यू विल हैव टू बी अवेयर, आपको अवेयर होना होगा व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या देश में चल रहा है, क्या आपके दूसरे देशों में चल रहा है, कहां पे हमारे इंडिया का इंटरेस्ट जो है आपको शो हो रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज में है, ठीक है। So current affair को you cannot ignore current affair. Maybe if you will start reading newspaper, you'll face difficulty, no problem. But after 1 month, 2 months, you'll be able to understand कि which topics, which news you will have to cover. Because in newspaper you will not have to read entire newspaper. Okay? For reading newspaper, 1.5 hour is sufficient. And जब भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर कवर करते हो, तो थोड़ा सा जॉटेड डाउन, नोटेड डाउन करिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स, स्कीम्स, वो कोई भी चीजें, सोर्स क्या हो सकता है, बेस्ट सोर्स द हिंदू, ओके, गवर्नमेंट के आपकी वेबसाइट, पीआईबी, नीति आयोग की वेबसाइट्स, ये सारे इंपोर्टेंट सोर्सेज जो है आपके हो सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की वेबसाइट, ओके। सो यू कैन नॉट इग्नोर द करंट अफेयर। मे बी मैनी एस्पिरेंट्स, let's suppose if they will prepare for, you can say 2028 2029, then I can say you can avoid the current affair. But if you are preparing for 2026 2027, you will have to cover the current affair, okay. Maybe you can go through the newspaper. Let's suppose if you face difficulty, there are lots of videos, you can go through it, how to read the newspaper, okay. So this is important. Then after that, mistake number 4, over-reliance on coaching institute. भाई कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर कहूँ ना, आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसमें भी आपको सिलेक्टिव होना है कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के, ठीक है। एंड देन उसमें एक चीज और भी बता दूं कि आपको सेल्फ स्टडी आपको करना होगा आपकी क्लास में। लेट्स सपोज इफ यू कवर द, यू कैन से टॉपिक इन द क्लास, but after that it is compulsory to, you will have to read the book, you will have to go through the PYQs, you will have to go through PYQs for pre and also mains, okay. So you cannot totally rely on coaching institute, you will have to give your time for your self study. Self study is more important, self study is more important, you cannot ignore the self study. So that's why you should have your proper study plan also, and you will have to know about syllabus. So first know about the syllabus, then trends, okay, recent trends, then after that proper, you should have proper study plan, and then after that you have to cover current affair also. Mistake number 4, over-reliance on coaching institute. I already told you, you will have to manage your time for self preparation also, okay. Then mistake number 5, neglecting NCERT book. I already told you, you cannot neglect the NCERT book, especially if you have time, if you are going to appear for 2027 2028, you should try to read the NCERT. Of course you will have to read, because if you go through the UPSC PYQs or any state service PYQs, you will get the question from NCERT book, direct lines. Not only you can say in prelims examination, also in mains examination, okay. So you will have to cover NCERT. Then mistake number 6, inadequate answer writing practice. Inadequate answer writing practice. Maybe when you will start preparation, you will face difficulty related to content, but first you will have to cover NCERT. So when you will cover NCERT, so you will have to solve the, you can say ना कि questions, आपको चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, आपके एमसीक्यू बेस आता है, वहां पे सब्जेक्टिव आता है, उसको लिखने की कोशिश करिए ना। और आजकल तो बहुत सारे आपको चैट जीपीटी से भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, बट यू विल हैव टू स्टार्ट। हम लोग कहते हैं कि अपने प्रिपरेशन के पहले दिन से ही हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन लिखने की, आंसर लिखने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकंड डे एनसीईआरटी की हम कोशिश करते हैं ना, फिर उसके लिए हेल्प लेते हैं, नेट से लेते हैं, फिर समझते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, बट यू कैन नॉट अवॉइड द आंसर राइटिंग, ओके। बट फॉर प्रॉपर, जस्ट लाइक फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लाइक दिस थिंग, यू विल हैव टू कवर एट लीस्ट 25 to 30% of
major subjects. 25 to 30% of major subjects. Okay. And mistake number 7, insufficient revision. Without revision, please keep in the mind, without revision, please try to understand what, if without revision you cannot prepare, you can say sufficiently for this exam. So आपको क्या करना होगा, प्रॉपर जो है आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान में रखना है कि रिवीजन जो है आपको करना होगा. ओके, यू कैन नॉट इग्नोर द रिवीजन. For revision, many aspirants used to ask me, sir, what should be the, you can say, proper strategy for revision. So भाई रिवीजन के लिए एक आपको तो डेली करना है, डेली ऑनगोइंग बेसिस पे जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको सोने से पहले रिवाइज करना है. टेक योर ब्लैंक पेज, ट्राई टू नोट डाउन द टॉपिक, देन आफ्टर दैट ट्राई टू रिकॉल. या बिफोर यू कैन से कि रिवीजन, okay, you can go through your own notes. It will be also revision, but according to me, best revision is what? You take a blank page, try to put the heading, okay, you can say subjects and then heading, and then try to recall what was the major important things in the topic. So it will be really very helpful. So make your plan, okay, for revision on a daily basis and then on a weekly basis also. Weekly basis for completed topics या completed subjects. Okay, so there should be a cycle for revision. There should be a cycle for revision. This is also important. And then after that, most important thing, you will have to solve PYQs. You will have to try to attempt the mock test. At least 2 mock tests or 1 mock test in a week. Okay, so this is really very, very important. So what have you learned from this video? First of all, you will have to understand about the syllabus. Then you will have to basically make a proper study plan, and then after that you will have to start with the basics, and then you cannot avoid the current affairs. Also we cannot avoid the you can say answer writing, and then we cannot avoid the revision. Okay, so make your plan. Let's suppose you face any difficulty, you can comment. Okay, and if this video will be helpful for you, you can like this video, you can share this video, and you can subscribe our channel for getting new updates. So thank you so much, and then we'll connect with the, you can say, upcoming video. All the best. May God bless you.